Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, in our today's class, my dear student, we are going to start your chapter number 12. Okay, and the name of your chapter number 12 is Natural Wealth and It's Important. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to discuss about the various natural resources which Mother Nature given us. Okay, and then the second topic which we are going to discuss in this chapter is importance of natural resources. Okay, how this natural resources are important for us. Okay, then last but not the least, conservation of natural resources. Okay, our natural resources are continuously depleting. Okay, so in what way we are going to conserve them? Okay, so all this topic we are going to discuss in this chapter. Now come with me and let's see the chapter. Natural resources are the earth treasures. They are things such as minerals, forest, and coal which exist in a place and can be used by people. Natural resources include sources of energy, air, water, land, soil, minerals, microorganisms, plants and animals. Okay, my dear student, so what is the true natural treasure for our planet earth? It is our natural resources. Okay, and natural resources are presented in the form of minerals, forest, coal, petroleum, etc. and etc. Okay, and they also include our solar energy, wind energy, okay, soil, minerals, microorganism, etc. and etc. All this comes under the category of natural resources. Now, natural resources are of two types. Yes, my dear student. So, natural resources are of two types. Okay. So, the first type of natural resources is inexhaustible resources, and the second is एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज. ओके, सो देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं वो दो पार्ट में है. ओके, तो पहला है हमारा इन एग्जॉस्टेबल और दूसरा है एग्जॉस्टेबल. ठीक है, तो क्या होते हैं, लेट्स सी. तो देखिए जो इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, inexhaustible resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human use. Okay, this includes solar energy, air, sand, tidal energy and rainfall. So what is the meaning of inexhaustible resources? So the meaning of inexhaustible resources is this type of resources are available in abundant, or we can say in unlimited amount. Okay, they are not going to be exhaust, or they are not going to be deplete in near upcoming future. Okay, so examples of inexhaustible resources are our solar energy, tidal energy, sand, air, etc. and etc. Okay, and on the another hand side, my dear student, what is the meaning of exhaustible resources? Okay, it is the just opposite of inexhaustible resources. Okay, so exhaustible resources का मतलब क्या है? Exhaustible resources are present in limited quantity in nature and are likely to be finished by human use. ठीक है, तो ये क्या है? They are limited in amount. Okay, and due to the continuous use of this resources, they are going to deplete in our nearby future if you are not going to conserve them. Okay, they cannot be replaced. And you know what, there is one basic difference between inexhaustible and exhaustible. Exhaustible resources can't be replaced. Okay, exhaustible resources are of two types. So exhaustible resources are also further classified into two types. Okay, now what are those two types? They are renewable resources and non-renewable resources. Okay, see, our natural resources are broadly classified into two categories: inexhaustible resources and exhaustible resources. Okay, and this exhaustible type is further classified into two types: renewable and non-renewable. Okay, let's see. Crops, forest, domestic animals and wildlife are renewable resources. Okay, they all comes under the category of renewable resources. Then comes the turn of non-renewable resources. These are metals, minerals, coal and petroleum. Okay, means our metals, our minerals, our coal and petroleum, they all comes under the category of non-renewable resources. Okay, now we have been using natural resources indiscriminately. This has happened because of this reasons. हम लोगों ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज को बिना किसी डिफरेंशिएशन के थ्रू आउट द एजेस यूज किया है. हमें ये पता ही नहीं है कि जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. हमें ये पता ही नहीं है. नाउ कंटिन्यूअसली वी ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग देम. ओके, तो इसका क्या असर हुआ है, चलिए देखते हैं. अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. अच्छा, हम लोगों ने कंटिन्यूअसली रिसोर्सेज का यूज किया, पर क्यों किया है, रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन है द कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. ठीक है, सेकेंड इज अर्बनाइजेशन. यस, अर्बनाइजेशन. अब पॉपुलेशन बढ़ रही है
तो खाने के लिए चाहिए, ठीक है। और विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को सर्च करने के लिए क्या करते हैं, अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं। ये आज से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से होता आ रहा है, ठीक है। तो जब वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं, दे लीव बिहाइंड देयर ओन होम इन रूरल एरियाज, तो उससे क्या होता है, विलेज की पॉपुलेशन अर्बन में जाके बस रही है, तो इससे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, then people need large houses, okay, then people need basic amenity facilities, okay। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, we human beings are indiscriminately using our natural resources unlimited, okay। Then comes industrial and technological development. Due to industrialization and scientific development and innovations, these resources are also used by human population indiscriminately, okay। Now keep in mind fact, harmful substances that damage the environment are called pollutants. Now what is the meaning of pollutants? Okay, pollutants are those harmful substances which is continuously damaging our environment, okay। Then the process of damaging the environment is called environmental pollution, okay। Now what is the meaning of environmental pollution? The process of damaging, okay, so the damaging process of our environment is called as environmental pollution, okay। Now comes the turn of soil. Soil is an important because plants grow on it. Animals depend on plants for their food, thus all living things including us depend on the soil for food. सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई सॉइल इज नेसेसरी, क्योंकि जो प्लांट्स हम लोग खाते हैं, जो जिन प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, वो इसी सॉइल में तो उगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। We also depend on the soil for many other things such as materials for building houses, okay, and we human beings dependent upon soil not only for our foods but also for our material supplements, okay। Six main types of soil are found in different regions in India. My dear student, you all know our country, India, is culturally diversified country. That's why in all the directions of India, totally we can find out total 6 type of soils. Okay, total 6 type of soils are found in our country, India. Okay, and the name of those soils which we can found or which we can see in the throughout our country, India, is they are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, desert soil and mountain soil, okay। And among this, my dear student, alluvial soil is considered as the most fertile soil, okay। Alluvial soil is the most fertile soil which is found near the Ganga basin area, okay। And black soil, this black soil is particularly found in the areas of Gujarat and Maharashtra, okay। And black soil is world famous for its cotton cultivation, okay। Similarly, red soil, laterite soil, desert soil and mountain soils, okay। Desert soils and laterite red, they all are found in the desert areas and near about the area which is not so much fertile, okay। And mountain soils are found in the areas of mountain regions, okay। So you can see in our country India, we have mountain ranges, we have desert area, we have coastal regions, and as well as we have our islands, okay। And the area which is famous for cultivation is the area of alluvium soil deposit area, okay। So this different types of soils are suitable for growing different types of crops. ये जितने भी सारे हमारे soils हैं, ये क्या हैं, ये पूरा इनका अपना अलग अलग खासियत होती है, ठीक है। जैसे डेजर्ट सॉइल है, हमें लगता है ओ गॉड इसमें क्या उग सकता है, लेकिन डेजर्ट सॉइल डेजर्ट एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैक्टस आता है, ठीक है। तो देखिए, तो हर तरीके के जो सॉइल्स है ना, उनकी अपनी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, ठीक है। और वो कोई ना कोई क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फेमस है, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ओके। अभी हमने सॉइल देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन कंजर्व आवर सॉइल। लेट्स सी। Conservation of soil can be done by growing plants, adopting terrace cultivation, making bridges, dams, and embankments. They control flood and thus protect the soil. Now, in what way we are going to conserve our soil? Okay, soil conservation is very much important. Okay, because if we are not able to conserve our soil, it means what? We are flash flooding. Okay, we are flash flooding our own fertile soil. Yeah, fertile soils. And if we don't have any kind of fertile soil, then what happened? Okay, we are going to starve ourselves. Okay, we are going to starve ourselves because we can't grow any type of crop. Okay, तो आप किस तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हो सॉइल्स का? तो आप सबसे पहले तो डैम्स बनाइए, ब्रिजेस बनाइए, साथ ही साथ टेरेस कल्टीवेशन को आप अडॉप्ट कीजिए। टेरेस कल्टीवेशन हमारे माउंटेन एरियाज में, स्पेसिफिकली हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत फेमस है, ठीक है। इससे भी हमारा सॉइल कल्टीवेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
पेड़ लगाइए, ठीक है। आप पेड़ लगाओगे तो पेड़ के जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। तो उससे चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए वहां पे फ्लैश फ्लडिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए ना, कीप इन माइंड सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ रॉक्स। अच्छा, सॉइल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल? अभी तो बहुत सारी बातें कर ली, सॉइल क्या है? सॉइल एक्चुअली रॉक्स हैं जी। सॉइल्स रॉक्स के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली एक एरा से रॉक्स क्या हो रहे हैं, डेरिवेशन के प्रोसेस के थ्रू कट होते जा रहे हैं, ठीक है। जो कंटिन्यूअसली रॉक्स कटते जाते हैं फ्लड की वजह से, पानी की वजह से, किसी भी वजह से, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन द मोस्ट टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ दिस रॉक्स आर कॉल्ड एज सॉइल, ओके। नाउ वाटर, this is also our most important, or you can say one of the most important natural resources which mother nature has blessed us. Life is not possible without water, absolutely right. All plants and animals need water. We need water to drink, bath, wash clothes and cook our food. पानी हमें क्यों चाहिए? पानी हमें नहाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए और साथ ही साथ खाना पकाने के लिए चाहिए, ठीक है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड, ओके। सो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड? इट इज आवर रेनफॉल, ओके। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर आर, एंड अपार्ट फ्रॉम रेनफॉल वी हैव आल्सो सम अदर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज rivers, lakes and other water bodies. Underground water is an important source of water too. Even the underground water is also considered as the important source of water. Wells are dug to bring out underground water. But how we are going to get those underground water? Okay, with the help of construction of wells and tube wells. Sea water is available in plenty, but it cannot be used as it contains a lot of salt. You all know, my dear student, our planet Earth is covered by 97%. 97% portion of our Earth planet is covered with water. Okay, but these water are salty water, that's why we can't drink them. Only 2% water is fresh water, which is available in the form of rivers, lakes, ponds. Okay, now water pollution. Okay, now water is the one of the most important natural resource, and without water we human beings and all living beings can't survive. Okay, but you know what, due to us, our water bodies are continuously polluting. Okay, now what are the reason behind water pollution? Let's see. The main water pollutants are, so main water pollutants हमारे क्या हैं? Domestic sewage, soaps and detergents, heavy metals and acid industrial waste, and seepage of chemical pesticides and insecticides from the agricultural fields. Okay, so all these are responsible for polluting our air. Okay, continuously dumpage of garbage in the riverside area, okay, and harmful chemicals which is used in soap and detergent. Okay, we human beings are continuously throwing them in our water. Okay, so it leads to the pollution of water. Okay, now my dear student, we are going to see in what way we can conserve our water. Yes, conservation of water is also possible if we are going to just give a if we are going to keep few points in our mind, like water is the cheapest but the most important natural resource, so it must not be wasted. You all know, my dear student, water is very cheap natural resources, but सबसे important यही है, इसीलिए हम इसको waste नहीं कर सकते. Okay, factories should not be allowed to pour their dirty chemicals into water bodies. Sewage should be treated before being released into water bodies. Instead of chemical pesticides, natural fertilizers should be used to grow crops. तो कैसे आप कर सकते हो? जितने भी इंडस्ट्रीज के और फैक्ट्रीज के जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हमें उनको पानी में डंप नहीं करना है. उनके लिए एक अलग से सेपरेट एरिया हमें बनाने की जरूरत है ताकि वो हम वहां पे डंप कर सकें. साथ ही साथ जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये सब क्या करना चाहिए? देखिए, केमिकल पेस्टिसाइड जो हम लोग यूज करते हैं अपने प्लांट्स में, ठीक है, उससे सिर्फ हमारा सॉइल खराब नहीं होता, उससे हमारा पानी भी पल्यूट होता है. ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या है? उसका ऑप्शन ये कि आप नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज कीजिए, जैसे गोबर, काउडंग सबसे बढ़िया है. ठीक है, आप काउडंग यूज कीजिए. इसी तरीके से बहुत सारे और भी हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स है व्हिच वी कैन मेक एट आवर ओन होम. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अगर करते हैं, देन इन अदर वे वी आर गोइंग टू कंजर्व आवर water. Okay, so the next natural resource is fossil fuels. Okay, now let's see what is the meaning of fossil fuels. Coal, petroleum and natural gas are called fossil fuels. Okay, fossil fuel means three names only: coal, petroleum, natural gas. This three combinedly forms our fossil fuels. Okay, most of the energy we use in our houses and industries and in running our vehicles come from fossil fuels. ठीक है, हमारे घर में जो भी एनर्जी रन कर रही है, इवन जब ये इलेक्ट्रिसिटी जल रहा है, इंडस्ट्रीज में जितनी भी पावर सप्लाई होती है, कोई भी चीजें वहां पे यूज होती है, इवन जो हमारी गाड़ियां दौड़ रही है सड़कों पे, किसकी हेल्प से? इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से दौड़ रही हैं. ठीक है,
fossil fuels are very useful, okay? They are nature's gift to mankind, okay? Actually fossil fuel is a gift given by mother nature, okay? A civilized life depend on the availability of energy obtained from the fossil fuels, okay? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, हम ह्यूमंस की वजह से कंटिन्यूअसली फॉसिल फ्यूल्स भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है? एंड इफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आवर फॉसिल फ्यूल, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल? अगर ये फॉसिल फ्यूल्स हैं तो ये हैं क्या एक्चुअली? देखिए ये ना हमारे एनिमल्स के और प्लांट्स बॉडी के रेमनेंट्स हैं, ठीक है? जब वो हजारों साल पहले वो खत्म हो गए इस दुनिया से, तो ये उन्हीं के फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हम यूज करते हैं. सो इज इट पॉसिबल, ओके, इज इट पॉसिबल टू remake this fossil fuels? Is it possible? No, because for its reconstruction it takes minimum 1,000 years. Yeah, it is mandatory. It takes 1,000 years. Is it possible? It is absolutely not possible, okay? So in what way we are going to conserve our fossil fuels? Let's see. Control on increasing population. My dear student, if any country is able to control their population, okay, then automatically they can control all the natural resources depletion, ओके? सेकेंड इज अवॉइडिंग वेस्टफुल यूज. अगर कोई यूज नहीं है आपका तो उसे फालतू में मत खराब कीजिए. देन रिपेयरिंग एंड यूजिंग अप्लायंसेस रादर देन थ्रोइंग देम अवे एंड बाइंग न्यू वंस. आपके घर में कोई अप्लायंसेस खराब हो गया है तो आप उसको रिपेयर करा लीजिए, ये ना कि आपने उसको उठा के फेंक दिया और उसकी जगह दूसरा नया लिया है, ये मत कीजिए, ठीक है? मिनिमाइज द नंबर ऑफ फैंस, लाइट्स एंड एयर कंडीशनर्स इन द हाउसेस. आज के घरों में, आज मॉडर्न जमाने में क्या है, जितने घर है उतने एसी है घर में. क्यों? आप एक साथ एक कमरे में, जैसे अगर आपके घर में 4 रूम है तो आप 2 एसी लगाइए बस, ठीक है? लेकिन क्या करना है, लोग करते नहीं है सिर्फ ये सारी चीजें. तो ये क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए इफ पॉसिबल तो हमें फैंस का, लाइट्स का, एसीज का अपने घर में कम से कम यूज करना चाहिए, ताकि जितने में हम लोग को गर्मी भी ना लगे एंड वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ओके? देन switch off the electrical appliances when not in use. Always switch off all the electrical appliances present in your home when they are not in use, okay? Then use public transport whenever you can. Instead of using a personal vehicle, you will help to conserve fuel and also help control pollution, okay? And try to use public transport, okay? Whenever you need, try to use public transport, okay? So in this way, by following all this way, we can conserve our fossil fuel. Now we are going to see the forest wealth. What is the meaning of forest wealth? See, forests are our natural wealth. They are one of the most essential renewable resources. They yield firewood, timber, and many useful products like wood pulp, gum, cork, rubber, bamboo, lac, resins, etc. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो फॉरेस्ट क्या हमारा नेचुरल वेल्थ है. फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, जिससे हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ बहुत ही इजी है. तो फॉरेस्ट हमें क्या क्या देता है? सबसे पहले तो फॉरेस्ट हमें फ्रेश ऑक्सीजन देता है, सबसे बड़ी चीज है जिससे हम जी रहे हैं अभी, ठीक है? इसके अलावा फॉरेस्ट से हमें वुड पल्प, गम, कॉर्क, रबड़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमें हमारे फॉरेस्ट एरिया से मिलती हैं. Forests are a source of medicines too, and even you know what, my dear student, many Ayurvedic medicines we get from our forest area. Okay, they provide the best habitat for various kinds of wild animals. Even forest is also the natural home for wild animals and many species of birds. Even our tribal community people also used to live nearby forest area. Okay. Forest checks flood and prevent soil erosion. Okay, forest always check our flood, and forest also help in controlling the soil erosion. They also purify air and regulate the climate. Okay, and forests are also responsible for purifying the air and for the regulation of the climate. They increase rainfall by keeping the air cool and releasing water vapor in the air. Okay, so forests are also responsible for plenty of rainfall. Okay, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. लेकिन हम ह्यूमंस ने क्या किया है, हम ह्यूमंस ने फॉरेस्ट को भी नहीं छोड़ा, ठीक है? हमने उन्हें भी बर्बाद करना शुरू कर दिया कंटिन्यूअसली डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू सी मेनी कंजर्वेशन वेज थ्रू व्हिच वी कैन प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट वेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स. ओके, आप फॉरेस्ट फायर्स को रोकने की कोशिश कीजिए. नेचुरल तरीके से अगर आग लगी है, देन ट्राई टू कंट्रोल देम एज सून एज पॉसिबल. ओके, सेकेंड है यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फंगीसाइड्स. ठीक है, आप पेस्टिसाइड्स को और फंगीसाइड्स को आप यूज कीजिए. देन कंट्रोल ऑन कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन रोकिए सबसे पहले. ठीक है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. अगर आपको पेड़ काटने हैं तो अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो उसकी जगह पे मिनिमम 5 ट्रीज आप लगाइए. ठीक है, प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स.
जो कैटल्स हमारे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये भी खाते हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो क्या करना है, उन्हें खाने को देना है, लेकिन उनको ज्यादा खाने से रोकना, ओवर ग्रेजिंग करने से रोकना है, ठीक है। Okay, my dear student, now here comes the our another natural resources in the form of wildlife. ठीक है, वाइल्ड लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। अच्छा, अभी तक हमने जितना पढ़ा फॉरेस्ट, सॉइल, ये सब तो ह्यूमंस के लिए हैं। अच्छा, वाइल्ड लाइफ किस तरीके से हमारे लिए इतने ज्यादा प्रीशियस है, तो चलिए देखते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। वाइल्ड लाइफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइल्ड लाइफ में वो सारे प्लांट्स और वो सारे एनिमल्स आते हैं जिन्हें हम अपने घर में नहीं रख सकते, ठीक है। लीगल हंटिंग, पोल्यूशन एंड पेस्टिसाइड्स हैव किल्ड सो मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके, ड्यू टू द कंटिन्यूअस हंटिंग, ड्यू टू continuous increase of air pollution, noise pollution, soil pollution and air pollution, and continuous use of pesticides, many species of plants and as well as animals are extinct, or maybe they come under the endangered species category, okay. That many types of animals and plants have been completely wiped out from the earth, ठीक है। Now conservation of wildlife, तो अब वाइल्ड लाइफ तो हमने देख लिया, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखना कि वाइल्ड लाइफ जो हम लोगों की वजह से, ह्यूमंस की वजह से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ क्या हुआ, खत्म हो चुके हैं, तो खत्म होने के कगार पे, आप उन्हें कैसे रोक सकते हो, ठीक है। Conservation of wildlife includes protection, preservation, and perpetuation of rare species of plants and animals in their natural environment. Now, in what way we are going to conserve our wildlife? By preventing them, by protecting them. Okay. इसमें क्या आता है, हमारे बहुत से ऐसे रेयर स्पीशीज है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के, जो अगर वो बचेंगे, देन ओनली वी ह्यूमंस आर गोइंग टू सर्वाइव, ओके। देयर कंजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर आवर ओन सर्वाइवल, ठीक है। इसीलिए इनका कंजर्वेशन भी हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली, हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हमारे एरियाज में आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वो ह्यूमंस को मार रहे हैं, ह्यूमंस उन्हें मार रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, वो एनिमल्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ओके, बिकॉज दे एनिमल्स आर इनोसेंट, वी ह्यूमन बीइंग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देम, ओके। तो ये सारी चीजें करके वी कैन कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द quick wrap up of this chapter. Forests are the most renewable resources. All living things, including us, depend on the soil food. Absolutely right. Natural resources are treasure to the earth. And the last, natural resources are of two types: exhaustible and inexhaustible. Okay. And now the fact corner. We celebrate One Mahotsav on 30th August every year to emphasize the importance of planting trees, conservation of wildlife, and protecting trees every year in our country, India. A Mahotsav known as One Mahotsav, a festival, okay, a festival is celebrated throughout the entire India on 30th of August, okay. So this is all about our chapter. Now come with me and let's see the question answers. So सबसे पहले तो OMR शीट का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, तो आप लोगों को मैं आपके हर चैप्टर में बताती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OMR शीट। तो OMR शीट का मतलब है, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक शीट दी जाती है जिसपे आपको आपके आंसर्स मार्क करने होते हैं। उसमें या तो 3 ऑप्शंस होंगे या तो 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपके अकॉर्डिंग जो सही आंसर है, ठीक है, तो आप उस आंसर के ऊपर या नीचे जहां पे वो सर्कल होगा, उस सर्कल को पूरा कलर करना है। लेकिन अगर आपने सर्कल को पूरा कलर नहीं किया, या हाफ कलर किया, या टिक कर दिया, या क्रॉस करके बस छोड़ दिया, ये चारों तरीका आपके आंसर देने का गलत है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑफ OMR शीट। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए, नेचुरल रिसोर्सेज आर द अर्थ। तो नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ का क्या है, ट्रेजर, डायमंड, प्रॉपर्टीज, ट्रेजर्स हैं, ठीक है। Animals depend on plants for their life, stay, food. Animals depend on plants for their food. Then comes planting of trees is called forestation, afforestation, both, okay. So planting of trees called afforestation. Now filling the blanks. Natural resources are of two types. बिल्कुल सही बात है, natural resources दो टाइप के, exhaustible और inexhaustible. So right here, exhaustible, exhaustible, okay, then inexhaustible. Okay, now harmful substances that damage the environment are called pollutants. यही है, देखिए, pollutants. Pollutants. Dash is important because plants grow on it. क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है, सॉइल है, ये रहा देखिए,
Soil is important because plants grow on it. Okay, so right here soil. Then soil is formed by the dash and dash of rocks. Soil कैसे बनता है, ये रहा इसका आंसर देखिए. Soil are formed by disintegration and movement of rocks. Disintegration and movement of rock. Movement of rocks. Now dash is the main source of water on land. तो मेन सोर्स क्या है आपका, रेनफॉल है, ये रहा देखिए. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड. सो राइट हियर रेन. रेन. देन कंट्रोल ऑन इंक्रीजिंग, क्या करना है, कंट्रोल ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक है, कंट्रोल ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. Then forest check dash and prevent dash. Okay. Forest check floods and prevent soil erosion. Floods and prevent soil erosion. Soil erosion. Okay. Now, अच्छा अब क्या करना है देखिए. सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. ओके, नेम सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो आपको क्या करना है, सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं. ओके, तो देखिए क्रॉप्स, फॉरेस्ट, डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है. अब फिर सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, बी. हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल. हम सॉइल कैसे कंजर्व कर सकते हैं. देखिए ये रहा. ओके, तो कंजर्व आप कैसे कर सकते हो. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय ग्रोइंग प्लांट्स, एडॉप्टिंग टेरेस कल्टीवेशन, मेकिंग ब्रिजेस एंड डैम्स. ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है ये. नाउ हाउ, व्हाई कैन सी वाटर नॉट बी यूज्ड. सी वाटर आप क्यों नहीं यूज कर सकते हो. ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा. sea water we cannot use because it contains a lot of salt. ठीक है, चलिए. देन कम्स व्हाट आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, तो ये रहा आपका आंसर. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट वेल्थ. ठीक है, तो किस तरीके से फॉरेस्ट वेल्थ को कंजर्व कर सकते हो, आपको 2 पॉइंट इसके बारे में लिखना है. ठीक है, तो ये प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स एंड यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स. ठीक है, क्योंकि 2 ही आपसे पूछा है. ठीक है. एंड व्हाट इज नोन एज वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ क्या है, तो ये रहा इसका आंसर. ओके, wildlife includes all plants and animals that are not domesticated. ठीक है. Then last, when do we celebrate वन महोत्सव. हम वन महोत्सव कब सेलिब्रेट करते हैं. ओके, we celebrate वन महोत्सव on 30th of August every year. ठीक है. अब चलो डी देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्या है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, डिफाइन विथ इट्स टाइप. नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, तो चलिए देखते हैं, उनके टाइप्स भी आपको बताने हैं. ओके, सो तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है. नेचुरल रिसोर्सेज आर द अर्थ ट्रेजर. They are the things such as minerals, forest and coal which exist in natural places and can be used by people. Okay, natural resources include sources of energy, air, water, land, soil, mineral, microorganism. Okay, and it is divided into 2 type, exhaustible resources and inexhaustible resources. ठीक है, फिर आप inexhaustible resources का एग्जाम्पल भी देंगे. वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके, सोलर एनर्जी है, एयर, सैंड, टाइडल एनर्जी और रेनफॉल. एंड देन सेकंड exhaustible resources. ठीक है, आप exhaustible resources को बताएंगे. देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ exhaustible resources. And exhaustible resources are further divided into 2 parts, renewable and non-renewable. ठीक है, ये है आपका आंसर. Now the second question, we have been using natural resources indiscriminately. Why? ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो इसका आंसर ये रहा. We have been using natural resources indiscriminately because of this reasons. Okay, now you are going to write 1, 2, 3. This 3 points in them. Okay. Then next question. Why is soil important? Soil important क्यों है? Let's see. Conservation of soil, okay? Conservation of soil is very important because they control floods and thus protect the soil, okay? And conservation of soil can be done by growing plants, adopting terrace cultivation, making bridges and dams and embankment, okay? Now the next question, how can we conserve water pollution? ठीक है, आप water pollution को कैसे बचा सकते हो? So ये रहा आपका आंसर. Okay.
Conservation of water resources. Factories should not be allowed to pour their dirty chemicals into water bodies. 1 point. Second, sewage should be treated before being released into water bodies. 2. Third point, instead of chemical pesticides, natural fertilizer should be used to grow crops. Okay? Now the next question. Why are fossil fuels useful? How can we conserve it? ठीक है, fossil fuels क्यों important है, हम किस तरीके से उनको conserve कर सकते हैं? So let's see. Okay, see, fossil fuels are very useful. They are nature's gift for mankind. A civilized life depend on the availability of energy obtained from the fossil fuels. ठीक है? And now, my dear student, you all are going to write some points in which you are going to show how we are going to conserve our fossil fuels. Like among this 5 points, okay, not 5, among the 6 points, you are going to write 3 or 4 points according to your choice. Okay. Now the next question. Why are forests useful? Forest useful क्यों है? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं. See, forests are our natural wealth. They are very useful for human beings and as well as wildlife also. Okay, they give firewood, timber and many useful forest products like this. आप ये सारा लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद आप ये भी लिखेंगे, they provide the best habitat for various kind of wild life. Okay, and as well as they prevent soil erosion and they check floods. Okay, they also purify our air and regulate the climate. ठीक है. Now activity time A. Find out about the organizations involved in the conservation of wildlife in India. ठीक है, इसमें आप लोगों को वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में काम करते हैं वो आपको पता करना है. ठीक है. देन बी, मेक अ चार्ट शोइंग कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आप ये बताओगे किस तरीके से आप पेट्रोल और डीजल को कंजर्व करने वाले हो. ओके. Okay, my dear friends, so this is all about our chapter number 12. Now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Okay. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.